Assalamu alaikum students. This session will be about the provocative examination. Specific test हम discuss करेंगे which can be used to detect the bicep tendon pathology or the slave lesion. उसमें से हम इस टेस्ट में a number of टेस्ट हम डिस्कस करेंगे और हर एक टेस्ट की हम जो डायग्नोस्टिक की एक्यूरेसी है इन सेंस ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी जो लिटरेचर में रिपोर्ट की गई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो अवेलेबल एविडेंस है लेवल 1 और लेवल 2 स्टडीज की वो यही कहते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू diagnose the slap lesion or the bicep tendon pathology, so a combination of some specific tests, a cluster of tests should be used. अब कौन कौन से टेस्ट है तो अगर हम बात करें तो इसमें जैसे स्पीड टेस्ट है, अपर कट टेस्ट है या और भी बहुत सारे इसके टेस्ट है जो अभी आगे स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट की जो सेंसिटिविटी एक रिपोर्ट हुई है दैट इज 32% एंड स्पेसिफिसिटी 25%, which mean it is a very weak sensitive and sense is a weak test, इसकी बहुत sensitivity कम है, while on the other hand जो है specificity that is in moderate specificity, but still it is not good as for a good specific test. In the speed test, usually the patient would elevate the shoulder, or during the elevation, the therapist hand will be, one hand will be on the shoulder, while the other hand will be just on the distal forearm. और पॉजिटिव टेस्ट जो है कंसिडर होगा if the patient will attempt to elevate the arm further and the therapist will provide the resistance. अब इसमें से कुछ वेरिएशन लिटरेचर में मौजूद है। अब बाज स्टडीज ये कहती हैं कि the elbow should be extended, and in some literature it has been reported that the elbow should have some slight flexion, but it's okay if slight flexion that will be 10 to 20 degree flexion, or it may be extension, but in the number of various literature में जो majority of them है ना, or they're suggesting that it should be extended. So it's दोनों की लिटरेचर में दोनों की सपोर्ट मौजूद है। It can be extended and it can be slightly flexed. Forearm जो है that would be supinated, as we can see here. The palm is toward the ceiling, so it is supinated. अगर पेशेंट जो है इससे आगे एलिवेट करेगा against the resistance of the therapist, against the resistance of that examiner, और इसको पेन यहाँ पे हो रहा है, which that will indicate जो bicepitic groove है जहाँ से long head of the bicep tendon गुजरती है, तो अगर if the patient have some pain there, then it would be considered as a positive test for the bicep tendon pathology. अपर कट टेस्ट, आप सबसे पहले तो ये कि अपर कट टेस्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जो बॉक्सिंग में एक पंच होती है विच इज नोन एज द अपर कट पंच, ये उसकी पोजीशन होती है, दिस इज दैट पोस्चर फॉर द अपर कट। इसकी सेंसिटिविटी 73% है, स्पेसिफिसिटी 78% है। In the uppercut test, the involved shoulder is positioned at neutral initially, the elbow is fixed to 90 degrees, and the forearm is supinated. And the patient make a fist, जिस तरह यहाँ पे बना हुआ है। The examiner instruct the patient to perform a boxing uppercut punch, just like here, while placing his or her hand over the patient fist to resist the upward motion. पेशेंट जो है इनिशियली यहाँ पे होगा न्यूट्रल पोजीशन से ये ऊपर की तरफ जाएगा, एलिवेट करेगा, एट द सेम टाइम द थेरेपिस्ट विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस। So during that elevation with the elbow flexed and that supinated fist, अगर यहाँ पे इस during this resistance while the patient just elevate the shoulder, the arm against
the therapist resistant against the examiner resistant, और इसको अगर पेन हो रहा है, so that will be an indication for that bicep tendon pathology. और पेन जो है इसको यहाँ पे जो बाइसेप्टर ग्रू है इंटीरियर शोल्डर पे, यहाँ पे इसको पेन जो है प्रोड्यूस होगा और इसको पेन यहाँ पे होगा. Irrigation test, another weak sensitive test जिसकी sensitivity थोड़ी सी कम है, थोड़ी नहीं बहुत कम है, 43%, स्पेसिफिसिटी है 79%. और इसकी टेस्ट की जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी को देखते हुए इसलिए जो है रिपोर्ट स्टडीज लिटरेचर यही सजेस्ट करती हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट यूज, because there is not a perfect test जो हम कहें कि yes this is 98% specific, this is 97% sensitive. तो उसकी सब जितनी भी टेस्ट है इन सबके ऑलमोस्ट जो है sensitivity as well as specificity कम है. That's why a cluster of tests should be used while we are going to diagnose this pathology. In the irrigation test, the arm is stabilized against the patient trunk. It should be in the neutral position, and the elbow is fixed to 90 degrees. Forearm will be in pronator, and then the examiner manually resist the supination. The patient will attempt to have supination, and the therapist will provide resistance to that supination. So it means the patient will supinate the forearm against the resistance of the therapist. And during this uh, resistance supination, during that supination against the resistance, if there is pain at the bicipital groove, या यहाँ पे subluxation of the long head of the bicep tendon हो रही है, in both cases जो है this test will be considered as positive test. So that was irrigation test. In the beer hug test, sensitivity is 79% and specificity is 60%. During this test, the patient will be in standing position and the patient will place his or her hand on the contralateral shoulder. और इसका जो palm होगा, that would be on the interior shoulder. The palm is on the interior spit of the contralateral shoulder with elbow fixed 90 degrees. The examiner then applies an perpendicular external force. यहाँ पे यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो है थेरापिस्ट जो है ऊपर की तरफ इसको उठाने की कोशिश करेगा, while the जो पेशेंट होगा वो यही कोशिश करेगा कि मैं अगेंस्ट द रेजिस्टेंस जो है इसको अपनी जगह पर इसको प्लेस मेंटेन रखूं, and while the therapist will provide resistance in that direction. The examiner applies a perpendicular external rotational force to try and lift the patient hand off the shoulder. कोशिश यही करेगा. A positive test result when the patient cannot hold the hand against the shoulder as the examiner applies an external force. अगर ये उठ जाता है और ये होल्ड नहीं कर सकता, मेंटेन नहीं कर सकता, तो this test will be considered as a positive test. This test is basically for the rotator cuff, specifically that subscapularis muscle. The Billy press test, sensitivity 31% and specificity 85%. Examiner has the patient arm at the 90 degrees of the elbow flexion while and with internal rotation. यहाँ पे जैसे हमें लग रहा है, and the patient will try to press the Billy while the therapist will just resist that movement. So the examiner initially support the elbow and a positive twist occur if the elbow does not maintain this position upon the examiner removing the supportive force. The next test is the O'Brien active compression test, which is basically set up two provocative tests. Initially, one is with the internal rotation and the other is with the external rotation. The sensitivity is too less, that is 38%. Specificity is 61%. The patient is in standing position and the arm of interest, suppose here it is in the right side. This is position in 90 degree of forward flexion, 10 degree of adduction,
and internally rotate it. How we can see how we can internally rotate? Um, if the thumb direction is towards the floor, towards the ground, that will be internal rotation. And if the thumb direction is towards the ceiling, that will be external rotation. In this case, we can see here the thumb is towards the floor, so it is the internal rotation. And the patient will be in the maximum available internal rotation. इसके बाद जो है examiner places his or her hand over the patient elbow, just like here हम यहाँ पे देख सकते हैं, while instructing the patient to resist the examiner downward force. इस एरो को डायरेक्शन ऑफ द एरो शो कर रही है कि थेरापिस्ट जो है इसी पोजीशन में व्हेन इट इज द इंटरनल रोटेशन 10 डिग्री रिडक्शन एंड 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, थेरापिस्ट जो है नीचे की तरफ जो है प्रेस करेगा एंड पेशेंट जो होगा इसको रेजिस्ट करेगा। सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम स्टैंडिंग पोजीशन होगा, वही 90 डिग्री फ्लेक्शन होगी, 10 डिग्री रिडक्शन होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट मैक्सिमम इंटरनल रोटेशन इस दफा जो है मैक्सिमम एक्सटर्नल रोटेशन होगी। So this maneuver is repeated with the patient arm now rotated, so the palm faces the ceiling. That will be an external rotation. That was internal rotation. That was same maneuver होगा। Positive twist जो है वो थेरापिस्ट वही जो है डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करके जिस तरह इनिशियल टेस्ट में हो रहा था in the shoulder was internally rotated. A positive twist is denoted by pen located at the point 9 during the initial maneuver, thumbs down internal rotation in conjunction with the reported improvement or elimination of the pen during the subsequent maneuver when the palm was in the external rotation. अगर पहले टेस्ट में पेन जो है वहाँ पे प्रोक हो रहा था, so it will be a positive test and confirmation test report ये होगा कि yes the probability test is positive कि ड्यूरिंग द एक्सटर्नल रोटेशन अगर पेन जो है थोड़ा सा कम हुआ या जो है वहाँ पे completely eliminate हुआ, तो in that case the test would be considered as a positive test. The next test is the interior slide test, जिसकी sensitivity बहुत कम थी 10%, but specificity is somehow moderate, which is 82%. The patient stand with his or her hand of the involved arm placed on the ipsilateral hip with the thumb pointing posteriorly. सपोज ये राइट साइड पे टेस्ट जो है अप्लाई होने जा रही है, यहाँ पे वी कैन सी हियर कि हैंड जो है दिस इज ऑन द ipsilateral hip एंड थम्स हमको नजर नहीं आ रहे मीन द थम्स इन posteriorly. So this is the starting position of the patient in standing position, जिसमें से पेशेंट का जो हैंड होगा that will be placed on the ipsilateral hip. The examiner then places one hand on the joint line of the shoulder and the other hand on the elbow. That would be the therapist position. Now, what will be the procedure after that? Then the examiner applies an axial load as in the direction is showing. The axial load in the anterior superior direction from elbow to the shoulder. Now, when will be the test will be positive? The test will be positive if there is a painful pop sound or click on the interior or posterior joint line here. This test is used for the slab test, but it is a sensitivity is too less, that is 10%. Therefore, this test should be accompanied with a number of other tests. The other test is the supine resistance test. इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी अच्छी है, स्पेसिफिसिटी कम है 69%. Sensitivity is reported as 80%. Patient lies supine on the examination table with his or her arm in full elevation, as we can see here in these two images. The arms will be supported by the table. The therapist जो है distal to the that elbow अपना हाथ रखेगा जिस तरह हमें and will apply a downward force. और जैसे ही ये downward force apply करेगा, as here this is the elbow joint, this is the therapist hand. So the therapist hand will be just distal to the
एल्बो जॉइंट, और इसी पोजीशन के बाद जो है पेशेंट विल ट्राई टू एक थ्रोइंग पोजीशन में लेके जाएगा, यानी उसको ये अपने आर्म को जो है इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, इंटीरियर डायरेक्शन में लेके आएगा। ये यहाँ पे इस इंडिकेशन ऑफ एरो जिस डायरेक्शन में है, सही। सो examiner applies a downward resistive force just distal to the elbow while asking the patient to perform a throwing motion. It is resisted a positive only if elicit pain deep inside the shoulder joint or at the shoulder dorsal spoke along the joint and during the resistive movement. Performance of the test and the non-effective should not elicit any. This test is for that if mean that there is any slap lesion, so it will produce the pain. The next test, this is my shear test, which is also known as the modified Driscoll test or modified dynamic labor shear test. The sensitivity reported for this test is 80%. The patient stands with his or her involved arm fixed 90 degrees at the elbow and abducts the shoulder in the scapular plane to above 120 degrees. Examiner then applies terminal external rotation until resistance is appreciated. Next, the examiner applies a shear force through the shoulder joint by maintaining external rotation, a horizontal abduction, and lowering the arm from 120 to 60 degree of abduction. A positive test include reproduction of the pen or pen clicked or catch in the joint line along the posterior joint line between 120 to 90 degrees of abduction. So that was some special test which we can use in during the diagnosis of the slap region. As the slap region is highly associated with the two conditions. One is the long head of the bicep tendon pathology, and the other is the interior instability. So that's why during the examination, we should have the evaluation of the radiographs and MR for that interior instability. And if there is no visual sign and inspection of that interior instability, then the bicep tendon pathology should be examined. तो ये जो जितने भी टेस्ट हमने अभी किए हैं इनमें से टेस्ट जो हैं ये यूज होते हैं उसके लिए बाइसेप टेंडन पैथोलॉजी की। इसके अलावा लिटरेचर में बहुत सारे और भी टेस्ट जो हैं ये रिपोर्ट हुई हैं फॉर द बाइसेप टेंडन पैथोलॉजी, विच जिसमें जो है इंक्लूड है द लिपमैन टेस्ट। इसके अलावा जो है एक दूसरा टेस्ट भी यूज होता है फॉर दैट बाइसेप टेंडन पैथोलॉजी नोन एज द लोडिंगटन टेस्ट। इस तरह जो है स्नैप टेस्ट भी यूज होती है बाइसेप टेंडन पैथोलॉजी उसके लिए। ह्यूटर साइंस, इसके अलावा एक और टेस्ट यूज होती है नोन एज द एबर्ट सॉन्डर्स टेस्ट, ये यूज होती है एंड द नॉन स्पेसिफिक बाइसेप टेंडन टेस्ट। तो ये तमाम टेस्ट जो हैं दीज आर यूज्ड फॉर द बाइसेप टेंडन, और इट इज वन ऑफ द कॉमन टेंडन जो शोल्डर में इंजर्ड होता है एंड स्पेसिफिकली in company with the slap region। तो स्लैप रीजन चूंकि सुपीरियर लेब्रम ये वही एरिया है जहाँ पे ये एंकर होता है ना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन का। तो व्हेन एवर देयर इज some lesion or injury to the superior that labrum and the anterior posterior direction on that glenide clock from 10 o'clock position to the 2 o'clock position, तो वहाँ पे जो है if there is some lesion to the labrum, तो लेब्रम के साथ साथ जो है ये टेंडन को भी समटाइम डिटेच कर लेता है, उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है। दैट्स व्हाई ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द स्लैप रीजन द बाइसेप टेंडन पैथोलॉजी दे शुड बी चेक्ड ड्यूरिंग दी स्पेशल टेस्ट जो अभी हमने उनके नाम में कुछ उसमें से हमने शामिल भी किए हैं यहाँ पे, तो दे शुड बी टेस्ट। अनदर पॉइंट यहाँ पे कि रिपीट कर लूँ कि एज यहाँ पे हमने देखा कि वजह क्या थी कि हमने इनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी यहाँ पे रिपोर्ट की है। इसकी वजह ये थी कि कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जिनकी स्पेसिफिसिटी या सेंसिटिविटी जो है ये 90 से ऊपर हो। इसका मतलब है कि इसमें हमारी जो है फॉल्स रिजल्ट्स आ सकती हैं, फॉल्स पॉजिटिव आ सकती है, फॉल्स नेगेटिव आ सकती हैं।
तो जो ट्रू पॉजिटिव रेट और ट्रू नेगेटिव रेट है इसमें ये उसका बहुत कम आएगा। तो यही वजह है कि हमने एक क्लस्टर ऑफ टेस्ट यूज करनी है। और जब तकरीबन 4 टेस्ट या 5 टेस्ट जो है ये तमाम के तमाम पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे हैं, तो देन वी कैन हैव कंसीडर दैट द कंडीशन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट जो है अभी हम डिस्कस करेंगे द इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द रेडियोग्राफिंग ए मेडिकल इमेजिंग इवैल्यूएशन। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने कहा है इंटीरियर इंस्टेबिलिटी की भी चांसेस होती हैं, स्लैब टेजिंग के साथ इसका एक सिचुएशन मौजूद है। तो हम इन्हें उसमें डिस्कस करेंगे कि जो radiographs से or that we will be check that if there is any anterior instability or not। तो सबसे पहले जो है हम ग्रेशी व्यू चेक करेंगे विच इज द ट्रू एपी व्यू। और इसमें जो है हम जो है देखेंगे कि इफ देयर इज एनी इंटीरियर डिसलोकेशन और नॉट। बाकी जो व्यू है इसमें स्केपुलर वाई व्यू है, एक्सिलरी लेटरल व्यू है, स्पाइनल व्यू है, इसके अलावा जो है वेस्ट पॉइंट व्यू है, तो वाल्पो व्यू है। ये तमाम व्यूज जो है यूज होती हैं टू असिस्ट दैट इंटीरियर इंस्टेबिलिटी। Acromioclavicular and glenohumeral joint osteoarthritis, calcific tendinopathy, osteochondral lesion of the gonad, or humerus fracture dislocation, bone tumors can be seen using the plain radiographs. This is the Cresci view. This is uh, this is the glenoid fossa, and the humeral head should be here. If it is interior dislocation, so it will be just inferior to that glenoid fossa, that humeral head. That will be present somewhere, like here in this position. If there was any interior instability or interior dislocation. This is the auxiliary lateral view, and this will be the result of radiograph. This is that head of the humerus. This is the glenoid fossa. This is the scapular Y view. And normally, this is the Y shape, scapular Y, lateral Y shape. This is the humeral head. And if it is interior dislocation, so the humeral head will be like here. If it is posterior dislocation, the posterior position of this posterior humeral head will be like here. And this radiograph, this is a normal because the humeral head is present like here. Similarly, if in the interior view and the oblique view, if the posterior dislocation is present, so we can also check there's vacant sign, denied vacant sign, or the light bulb sign. MR or the MR orthography. MRI and MR orthography, they are commonly used imaging modalities to detect a slap lesion, intra-articular contrast media, and articular effusion, as well as arm traction and external rotation improve the sensitivity of the MRI to determine a slap lesion. Clinicians should keep in mind the utilization of the MR orthography may promote the poor diagnosis of the asymptomatic or clinically irrelevant slap lesion, and thus exercise brisk clinical judgment in the ordering specific advanced imaging modalities। पहले सेशन में भी हमने ये डिस्कस किया था कि अमूमन ऐसे पेशेंट होते हैं जो दे आर एसिम्टोमेटिक, लेकिन जब उनमें की इमेजिंग आ जाती है तो उसमें वहाँ पे उसकी एब्नॉर्मल फाइंडिंग जो है सामने आ जाती है। दिस इज द दैट्स आर्थोग्राम प्रोसीजर। Interior approach of needle for image guided humeral joint injection of contrast material using the CT or the MRI. This is the CT scan, this is the MRI. The remaining will be discussed in the next session. Thank you so much.